एक्सक्यूज मी सर, दिसंबर ग्रुप में सर एक क्वेश्चन भेजा है सर, उसको सॉल्यूशन तो हो गया सर, बस थोड़ा कंफर्म करना है कि कंसेप्ट सही लगा है नहीं। Okay, beta. Which question is that? 1, 2 or 3? सर क्वेश्चन नंबर 2। Okay. सर इसका प्लॉट भेजो जो हमने बनाया है सर, एक बार देख लेना सर सही है या गलत है। Okay, बेटा मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको. I'll show it on the screen. ओके सर, थैंक यू। Okay. Okay. Okay, beta, the recording of the meeting is on now. So let's continue with our topic. So first of all, there are some couple of doubts. Now these topics are not yet covered with the Jan and Feb batch. So you people can just be in the spectator mode. So just listen to it. I will clarify these doubts, and later on we will be doing these topics in the coming week. In the next week, we will be doing these topics. So please don't take any tension in your mind, February batch and January batch. This topic is yet to be covered up. So let me show you this question. What this question is. This is about, you can say, this is a topic which we call as rendezvous. So that means meeting up with another ship. And this question which is there is slightly different. In this, actually, they are not meeting. They are actually passing close to each other. Two ships are passing close to each other. So let me show you the question on the screen first. So this is the question, beta, right? Number 2, you are saying that is at 1800 hours, a tanker is 355 degrees at 20 nautical miles of a cargo vessel and is steering 112 at 12 knots. The cargo vessel is steering a course of 090 at 12 knots. Find the minimum distance they will pass and also find the time that they will be closest to each other. Okay, so this is specifically aimed at December batch. Jan and Feb batch, we are yet to do this topic. So December batch candidates, this question is clear, beta. Number 2 question, are you clear about it? Any doubts in the question? No sir. Very good. So let's do this on the chart. Let me open up the whiteboard. We can do it on the whiteboard only. Okay, beta. So they have given us a cargo ship. Okay, let's say this is our cargo ship. And they have given us a tanker. So there is a tanker. Let's make it with red color. The tanker is somewhere here. So we can call this as T. T represents the tanker, and we can call this as C. C represents the cargo ship. Beta, can you tell me what is the bearing and range of the tanker? 355 and 12 miles. 355 and 12 miles. Okay. If I join both of them, this is basically 355 into 20 miles. 20 miles? 20. Yes sir, 20 miles. Okay, 20 miles off. So 355 and 20 miles off. We can actually make this plot on the chart also. If you want at any blank area on the chart, this plot can be made. If you want, you can make it on your answer sheet also. On the answer sheet, you will have to take a scale. So 1 mile is equal to 1 centimeter, or 2 miles is equal to 1 centimeter. That kind of a scale needs to be taken.
On the chart, if you get a vacant area, that will be good. It will give you large area to draw this, and you will get more accuracy. So anyway, so this is at 355 bearing and 20 miles off from the cargo ship. What is the course and distance of the cargo ship, beta? Course and speed? So cargo ship is doing 090 at 12 knots. 090, 12 knots. So 090. Beta, other people can please mute their mic. And what is the course and speed of the tanker, beta? Sir, 112 at 12 knots. 112 at 12 knots. At 12 knots. So this is the speed of the ship. Okay. Now, beta, what can we do here is, this is the condition which is given to us. वेदांत पैर रखते भी कपड़े भी गंदे हो जाए तो मैं थोड़ी साफ करूंगा रोज। वेदांत बेटा आवाज सुन रही है? लाइट कभी खुल रही है तेरी खिड़की? वेदांत बेटा आवाज सुन रही है? श्वेता पाटू सुन गई बेटा, वेरी गुड. Okay, so this is the data or information which is given to us. Now, basically, we have to find out what should be the line of approach. If they continue to move, what should be the line of approach? It is very easy to draw that. You see, tanker ship's course and speed is represented by the red color vector. Now, cargo ship course and speed is represented by the blue color vector. Now, if I put this blue color vector in the reverse order where this red vector is ending, okay, that means something like this. Let me show you. अगर मैं ये कार्गो शिप का वेक्टर यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में ड्रॉ कर देता हूँ, so ये क्या वेक्टर है? This is 090 into 12 miles. So wherever this vector is ending, ये मुझे एक पॉइंट मिल जाता है. And now if I join this line, let me pick up yellow color now. From the tanker ship, if I join this line, this basically gives me the line of approach. So this is the line of approach, how the tanker ship will be approaching as seen from the cargo ship. This is also called as relative line of approach. So the tanker ship will be relatively moving on this yellow color track. It will be moving on this yellow color track. Now to find the CPA, what we have to do is, from the cargo ship, you have to drop a perpendicular onto this line. So you can just measure the direction of this line on the chart from the compass rose, add 90 degrees to it. So you get the perpendicular direction, align your parallel ruler, and then draw a perpendicular like this. Now this is the point, let's call it as point X. This is the point where these two ships will be closest to each other, or you can call this will be the CPA point, closest point of approach. So if you measure this distance, it will give you the CPA. It is also telling you that the tanker ship will be passing astern of the cargo ship. And if you measure the distance will be the CPA. Now, how to find out the TCPA, time for closest point of approach? TCPA कैसे find करेंगे? जो ये बेटा triangle हमारी बनी है, आप देख रहे हो red side, blue side and yellow side. This is a 1 hour triangle. Okay, this is a 1 hour triangle. So if I name this point as, this is T, you can call it as A, you can call this point as B. Now TB is the speed of approach of the tanker ship.
So in 1 hour, the tanker ship will be moving from T to B. So what you do is you measure this distance Tx. This is the total distance which the tanker ship has to approach, and you divide it by the hourly rate of approach, which is Tb. So Tx upon Tb immediately gives you the TCPA. Okay, now how did I get the idea about this method? Beta, if you remember, जब हमने rendezvous की problem की थी, I told you if a ship is here, okay, let us say if a ship is steering a course like this, and you have to rendezvous with this ship. Let's erase this for the time being. Let's say a particular ship is at this position. You can call it P position. A particular ship is here, and your ship is here at Q. Let's call it Q. If you want to find out what course and speed should we maintain to make a rendezvous with this P ship, what we used to do was we used to meet P with Q, and this used to be our line of approach. और फिर हम क्या करते थे, जो भी हमारी स्पीड थी, हम उस स्पीड को जहाँ पे ये वेक्टर येलो वेक्टर खत्म हो रहा है, कंपास को यहाँ पे सेंटर रखते थे, and whatever our speed was, we used to cut our speed on this side. So this used to be our course and speed vector. So you see, this was the line of approach. This was our course and speed. This was the target course and speed. Now, if you look at this triangle with red, blue, and yellow side, it is exactly the same thing. The only difference here is the line of approach is not fixed. The line of approach has to be found out. What is fixed is the tanker ship course and speed and our ship course and speed. So we have made the same triangle with the two known data now. We have drawn the tanker ship course and speed vector. We have drawn our ship course and speed vector, and we have got the line of approach. So this is how you can do this. सर ये TX वाली लाइन कैसे प्लॉट करिए सर? लाइन ऑफ अप्रोच वाली सर? Okay, बेटा TA vector तो बना लोगे. First step is making the TA vector, that is 112 into 12 miles. Yes sir. ये that is step 1. TA vector आ गया. अब बेटा इसके बाद कार्गो शिप का कोर्स एंड स्पीड वेक्टर 090 into 12 miles. इसको हमने A से बैकवर्ड बनाना है. A से बैकवर्ड 090 into 12 miles. This is our ship course and speed vector. ये भी बना लोगे? Yes sir. जहां पे ये खत्म होगा बेटा वो B point है. So you have T point on your chart, you have B point on your chart. Just mark a line joining both of them and extend it downwards. Okay sir. Okay beta, so this question is clear beta? Yes. Let's say sir, अगर अभी 355 दिया है इंस्टेड ऑफ 355 अभी 005 दे रखा होता और स्पीड भी ज्यादा दे रखी होती, एंड इन द क्वेश्चन यू वुड बी आस्किंग कि टैंकर कितने आगे से जाएगा, तो भी ऐसे ही करना था. एग्जैक्टली बेटा, उस केस में लाइन ऑफ अप्रोच जो है वो कार्गो शिप के आगे से निकल जाएगी. तो एग्जैक्टली सेम वे यू कैन डू द क्वेश्चन देन. ओके सर ये टीसीपीए कैसे निकालोगे? बाउ क्रॉसिंग भी पूछते हैं क्या? मतलब बाउ क्रॉसिंग डिस्टेंस भी आएगा कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ही आएगा ओनली? ओके बेटा, 3-4 साल पहले एक सवाल आया था जिसमें आई थिंक दे आस्क्ड अबाउट बाउ क्रॉसिंग रेंज. It came about, I think, 4 years back or so, or maybe even more back. I can remember only one question like that, जिसमें वो लोग बाउ क्रॉसिंग रेंज जो है पूछ सकते हैं. तो इस केस में बाउ क्रॉसिंग रेंज अगर वो पूछते हैं आपसे, तो बाउ क्रॉसिंग रेंज जो है वो टैंकर शिप के बाउ से आगे क्रॉस करेगा कार्गो शिप. तो इफ दे आस्क यू व्हाट इज द बाउ क्रॉसिंग रेंज, तो बड़ा आसान है. 112 is the course steered by the other ship.
तो आप पैरेलल रूलर को 112 डायरेक्शन में अलाइन करो एंड यू पुट इट ओवर पॉइंट सी एंड ड्रॉ दिस लाइन। 112 की लाइन आप अगर ड्रॉ कर दोगे तो जहां पे भी ये कट करेगी येलो लाइन को, so that will basically give you the bow crossing range. Okay, but I don't think that this question has come. Maybe the one which I have seen is more than about 7-8 years back, beta. तो सर टारगेट शिप का कोर्स प्लॉट करना है तो हमको बाउ क्रॉसिंग रेंज मिलेगा। That's right, beta. आपको ये ट्रायंगल उस शिप पे बनानी है जिससे आपको बाउ क्रॉसिंग रेंज चाहिए। जैसे इस केस में कार्गो शिप विल बी क्रॉसिंग अहेड ऑफ द टैंकर शिप। ओके, तो अब मुझे बाउ क्रॉसिंग रेंज जो है वो टैंकर शिप से रेस्पेक्ट में लेनी है, बिकॉज फॉर कार्गो शिप दिस शिप विल बी क्रॉसिंग फ्रॉम द स्टर्न, so for cargo ship there will be no bow crossing range. Bow crossing range will be applicable to the tanker ship. Tanker ship बोलेगा that the cargo ship is going to cross my bow at so and so distance. So let us say अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो that tanker ship is passing ahead of the cargo ship, तो फिर यही ट्रायंगल आप कार्गो शिप पे बना दो। So if you make it at the cargo ship, तो आपको फिर बाउ क्रॉसिंग रेंज मिल जाएगी। मींस जिस शिप से भी बाउ क्रॉसिंग रेंज आपको चाहिए आप ट्रायंगल वहीं पर बना दो and you should get your bow crossing range from there. अच्छा समझ आ गया, मतलब वो रिलेटिव लाइन तो फिक्स्ड है, अप्रोच लाइन तो हम अपनी हेडिंग बस ड्रॉ कर देंगे, तो मतलब जब वो इस पॉइंट पे आएगा ही इज ऑन माय हेडिंग, तो वो बाउ क्रॉस करना मतलब। एग्जैक्टली बेटा, दैट्स राइट, क्योंकि शिप की हेडिंग तो यही रहने वाली है, बी पे आएगा तो भी यही होगी, एक्स पे आएगा तो भी यही होगी। तो बेसिकली वी हैव टू सी व्हेन दिस 112 लाइन अलाइंस विद दिस सी पॉइंट। सर ये एग्जांपल से समझा देंगे? ओके, क्या बेटा बाउ क्रॉसिंग रेंज वाला? हाँ सर। बेटा आई वुड रिकमेंड के डोंट गेट इनटू दिस, ये आने वाला नहीं है, और मैं अभी समझा देता हूँ। लेट अस से इसी क्वेश्चन में आपने बाउ क्रॉसिंग रेंज भी ढूंढी, सीपीए तो आपने ढूंढ लिया, somebody had doubt in the TCP also बेटा, so you is it clear or you want me to explain again? मुझे बता दीजिए। ओके ओके बेटा, ध्यान से देखो, जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है TBX, येलो कलर की लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन क्या है एक्चुअली? दिस इज द लाइन ऑफ अप्रोच, you can write it here, LOA, line of approach. Okay, you can also call it relative line of approach. Relative line of approach का मतलब है कि अगर हम कार्गो शिप को स्टेशनरी अज्यूम कर लें, this is how the target ship or the tanker ship going to move. Okay, relative bearing और distance tanker ship का इसी येलो लाइन पे चेंज होने वाला है। So now the triangle which we have made, TAB triangle हमने बनाई थी यहाँ पे। TA is the course and speed of the tanker ship, AB is or BA is the course and speed of the cargo ship, and TB is the line of approach. ये ट्राइंगल हमने बनाई थी, ये ट्राइंगल 1 आवर की ट्राइंगल है बेटा। So let us say जो करंट सिचुएशन है वो उन्होंने हमें 1000 आवर्स की सिचुएशन दे दी कि भाई एट 1000 आवर्स ये जो टैंकर शिप था कार्गो शिप से 355 20 माइल्स की रेंज पे है। इट इज स्टीयरिंग दिस कोर्स एंड डिस्टेंस, कोर्स एंड स्पीड, कार्गो शिप इज स्टीयरिंग दिस कोर्स एंड स्पीड, फाइंड आउट व्हेन दे विल बी मीटिंग, व्हाट टाइम दे विल बी मीटिंग। अब आपने बेटा जो ये ट्राइंगल बनाई है TAB ट्राइंगल, दिस इज ए 1 आवर ट्राइंगल। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली 1 घंटे बाद जो ये रेड कलर का टैंकर शिप है, एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद ये बी पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, एंड दिस TB बेसिकली गिव्स अस द रेट ऑफ अप्रोच ऑफ द टैंकर शिप ऑन दिस लाइन। अब हमें ढूंढना है इसका CPA। CPA जो आता है वो आता है पॉइंट X पे। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट कि टैंकर शिप पॉइंट X पे कितने बजे पहुंचेगा। So what you do is you measure distance TX on the chart, you measure distance TB also on the chart. TB is your hourly rate of approach, TX is the total distance to be approached,
So Tx divided by Tb will give you the time to closest point of approach. TCPA टाइम आपको दे देगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम बाद टैंकर शिप X पोजीशन पे आएगा. That's the concept of TCPA. So is it clear now, beta? Making sense? हाँ सर. Okay. ओके, और बताओ बेटा, और क्या डाउट है? सर जो CX होगा वो सिर्फ CPA हो जाएगा फिर एग्जैक्ट जो भी निकलेगा मतलब चार्ट पे. CX जो है CPA Yes, जो है. that's right, beta. If you measure distance Cx on the chart, it will give you the nearest distance which the ships are going to approach, or we call it closest point of approach. CPA distance it will give you. ओके सर. ओके, और बताओ बेटा, और क्या डाउट आ रहा है इसमें? Okay, so I hope this is clear now. Everything is clear? सर ये TX अपॉन TB जो किया है वो डिस्टेंसेस था ना सर? Right बेटा, these are distances. तो उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके टाइम मिल जाएगा. No बेटा, टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना. Let us say this distance Tx. Okay, just tell me ये TB डिस्टेंस आपने मेजर किया कितना आ गया, बता दो बेटा. सर 4 माइल. Let us say ये जो TB डिस्टेंस है ये आ गया 4 माइल. आपने इसको नोट कर लिया. अब मुझे ये भी बता दो, आपने चार्ट पे मेजर किया TX डिस्टेंस कितना है? 12 आ गया. 12. ओके, सो 12 माइल डिस्टेंस है बेटा. सो हमने क्या किया, पहले TX डिस्टेंस को लिखा 12, इसको डिवाइड किया किसके साथ? TB के साथ. सी आई हैव रिटन हियर TX अपॉन TB. तो मैंने इसे डिवाइड किया 4 के साथ. आंसर क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया 3. सो 3 आवर इज योर TCPA. अगर ये 10 बजे की सिचुएशन है तो एट 1300 आवर्स टैंकर T वुड बी एट पॉइंट X. ओके सर, ठीक. ओके, क्योंकि 1 घंटे में ये 4 माइल अप्रोच कर रहा है. टोटल डिस्टेंस T to X 12 है. तो दूसरे घंटे में 8 माइल कवर कर लेगा, तीसरे घंटे में 12 माइल कवर कर लेगा. सो एट 1300 आवर्स द टैंकर शिप वुड बी एट पॉइंट X. ओके. ओके ओके, और इसको देखो बेटा, ध्यान से देखो. अगर और कोई डाउट आ रहा है यू कैन आस्क मी, टेक योर टाइम. सर वो बाउ क्रॉसिंग का एक बार बता देते सर. अगर लेट्स से अगर टारगेट वेसल है, सो जस्ट टारगेट वेसल का कोर्स बना देना है टुवर्ड्स कार्गो वेसल. ओके बेटा, बहुत सिंपल है. उन्होंने आपको एक शिप पे डाल दिया, लेट अस से कार्गो शिप पे डाल दिया, और एक टारगेट शिप दे दिया, लेट अस से टैंकर शिप दे दिया. आप पहले टारगेट शिप का कोर्स वेक्टर ड्रॉ कर दो, और जहां पे ये कोर्स वेक्टर फिनिश होता है दैट इज पॉइंट ए. टारगेट शिप का कोर्स वेक्टर पॉइंट ए पे खत्म हो रहा है. इस पॉइंट ए से अपनी कोर्स एंड स्पीड रिवर्स डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो. तो जैसे ही आप ये अपनी कोर्स एंड स्पीड, विच इन दिस केस इज 090 into 12, जैसे ही आप ये ड्रॉ करोगे आपकी ट्राइंगल तैयार हो जाएगी. TAB ट्राइंगल इज रेडी. दिस ट्राइंगल गिव्स यू द लाइन ऑफ अप्रोच. तो जो तीसरी साइड आपके पास आ गई है, एक साइड तो है टारगेट शिप का कोर्स एंड स्पीड विच इज द रेड साइड, दूसरी साइड है ओन शिप कोर्स एंड स्पीड विच इज द ब्लू साइड. जो तीसरी साइड आपके पास आ गई है that immediately gives you the line of approach. So you can extend that line downwards and it tells you how the tanker ship is going to move with respect to your ship, in this case cargo ship. Okay, so ये तो हो गया टेक्निक. So this is up to here clear बेटा?
हाँ सर। ओके, अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। लेट अस से कि इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें सीपीए नहीं पूछा है। तो सीपीए अब हमें क्लियर हो गया है, सीपीए टीसीपीए कैसे निकालना है। मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें सीपीए नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे एक डिफरेंट चीज पूछ ली है। नाउ बेटा इफ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड सेव इट विद यू, क्योंकि अब मैं सीपीए टीसीपीए इरेज करने वाला हूं यहां से। Shall I erase it बेटा? यस सर। ओके, सो अब हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है बेटा। क्वेश्चन में हमने अब सीपीए टीसीपीए नहीं निकालना है, तो लेट्स इरेज दिस। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये हमने सीपीए भी इरेज कर दिया, ये पॉइंट एक्स भी इरेज कर दिया, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अब उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई आप ये बताइए, नाउ इन दिस केस वी नो दैट द कार्गो शिप, सी शिप, ब्लू कलर शिप is going to cross the bow of the tanker ship. टैंकर शिप येलो लाइन पे मूव कर रहा है, तो जो हमारी कार्गो शिप है, ब्लू कलर की शिप है, ये टैंकर शिप के बाव को क्रॉस करेगी। तो नाउ दे आर आस्किंग अस फाइंड आउट व्हाट विल बी द बाव क्रॉसिंग रेंज। ओके, वो हमसे पूछ सकते हैं कि टैंकर शिप के बाव के कितना आगे से ये कार्गो शिप पास करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग बाव क्रॉसिंग रेंज। They can ask us find the bow crossing range and also find the time for other ship to cross the bow. So you can call it time of bow crossing. ये दो चीजें उन्होंने हमसे पूछ ली। ये हमने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया है बेटा, इस क्वेश्चन में नहीं था ये। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्यों बनाया है? क्योंकि किसी के माइंड में डाउट आया है अगर ये पूछा जाए तो कैसे इसका आंसर निकलेगा, इसलिए हम इसे कर रहे हैं। तो अब हम बाव क्रॉसिंग रेंज और टाइम फॉर बाव क्रॉसिंग कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, आपके पास टैंकर शिप का कोर्स स्टीयर्ड है, वो कोर्स स्टीयर्ड है 112। आप अपने पैरेलल रूलर को 112 डायरेक्शन में अलाइन कर लो, कंपास रोज पे ले जाओ, 112 डायरेक्शन में आप अपने पैरेलल रूलर को अलाइन कर लो और इस पैरेलल रूलर को ट्रांसफर करके सी पॉइंट पे ले आओ। अब आप इसे सी पॉइंट पे ले आए, अब आप सी पॉइंट से ये 112 डायरेक्शन वाली लाइन को ड्रॉ कर दो। ये 112 डायरेक्शन वाली लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। Wherever this line cuts the yellow color line, okay, so it is cutting at this particular point. Let me make the shift here. So ये जो पॉइंट आ गया है बेटा हमारे पास, you can call it point X. This point is now the bow crossing point. Okay, cargo ship will cross the bow of the tanker ship in this particular situation. You want to find out the bow crossing range? Measure CX. It will give you the bow crossing range. Okay, beta. You want to find out the bow crossing time? ये किस टाइम पे या कितने टाइम के बाद कार्गो शिप टैंकर शिप का बाव क्रॉस करने वाला है? फाइंड आउट TB, फाइंड आउट TX. TX by TB will immediately give you the time for bow crossing. So this is clear now, beta? Yes sir. Okay. So any other doubt in this? सर क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया, बट ओनली एक मैथमेटिकल डाउट मैं सर पूछना चाह रहा हूँ। मतलब हमको इसमें मेन हमने जो इतना सब किया, हमको रिलेटिव लाइन ऑफ अप्रोच चाहिए थी बस। लेकिन उसको निकालने के लिए सर हमने दोनों वेक्टर्स को ऐड तो नहीं किया, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि मतलब क्या हो? हाँ बेटा, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन बोलते हैं।
लेकिन सर वेक्टर सब्ट्रैक्शन में तो टेल टू टेल जोड़ते थे ना, तो हमने हेड टू हेड जोड़ दिए। ओके, टेल टू टेल भी जोड़ी जा सकती है, उससे डायग्राम थोड़ी डिफरेंट बनेगी, लाइन ऑफ अप्रोच सेम आ जाएगी। ओके अच्छा ओके ओके सर, सेम आएगा, फिर वो लाइन ऑफ अप्रोच मेरे को फिर वापस टी में शिफ्ट करनी पड़ेगी। राइट, एग्जैक्टली, पैरेललोग्राम बनेगी, टेल टू टेल भी जोड़ सकते हैं, बट लाइन ऑफ अप्रोच फिर हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी टी पे, इसलिए मैंने एरो टू एरो जोड़ा है। समझ आ गया सर, होगा, थैंक यू सर। अब बेटा जिनको ये बात पता नहीं चली, हमारी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई अबाउट दिस, so don't raise any doubt in your mind. Okay बेटा, so that was this question. अब बेटा ये पिछला डाउट हमारा सॉर्ट आउट हो गया है, अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, so now this whatever we are proceeding ahead is target at all the 3 batches, primarily target at the January and February batch. So बेटा I think we were on assignment number 2. असाइनमेंट नंबर 2 पे हमारे 2 क्वेश्चन बाकी थे। सो फर्स्ट यू टेल मी, यू वांट मी टू डू दोज 2 क्वेश्चंस और हैव यू सॉल्व्ड देम बेटा? कर लिया सर, असाइनमेंट 2 कर लिया। असाइनमेंट 2 हो गई है बेटा, सो यू डोंट वांट मी टू गो इनटू इट, इट्स ऑल राइट? हाँ सर हो गया, तो असाइनमेंट 3 में एक छोटा सा डाउट है सर। ओके, सो गौरव यू आर फ्रॉम फेब्रुअरी बैच ना बेटा? नो, फ्रॉम जैन बैच। बेटा फेब्रुअरी बैच कैंडिडेट्स पहले मुझे बताओ कि आर यू पीपल कंफर्टेबल विद असाइनमेंट नंबर 2? सर ये क्वेश्चन नंबर 4 करवा देना सर, एक बारी उस सर्कल में प्रॉब्लम आ रही थी। असाइनमेंट नंबर 2 राइट? यस सर। Okay, so Gaurav, just hold on beta, just hold on, let me go ahead with number 2, let me finish it off, then we move on to number 3 beta. Okay? Okay, just give me a minute, we will open up number 2. I have assignment number 2 here. That's okay, where is number 2? No, not this one. Let's have the chart on one side. Okay, so assignment number 2. We had done up to number 3. Number 3 we had done. So number 4 question now. We are moving on to question number 4. So number 4 question says, let me minimize this. Chartwrok light was raised at a distance of 3.6 miles off, and 30 minutes later, it was observed to dip at a distance of 3.6 miles off due to poor visibility. In this interval, the vessel steered 235, current setting 330 at 2 knots. Determine the position of the vessel at the time of dipping of the light. So let's go to Chartwrok. Okay, beta, this is where Chartwrok is. So here रहा हमारा Chartwrok lighthouse. It's on the edge of the chart. Now it says Chartwrok light was raised at a distance of 3.6 miles off. Immediately it gives you a position circle. So if I keep a compass centered at Chartwrok, open it up equal to a distance of 3.6 miles, let me draw a circle. तो मैंने बेटा ये 3.6 माइल रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है. Now this becomes my position circle.
Okay. 30 minutes later, it is observed to dip at a distance of 3.6 miles. अब इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट के बाद यही टस्कर रॉक लाइट डिप हुई है अगेन एट द सेम रेंज 3.6 माइल की रेंज पे. So I have got a position circle 30 minutes later also. To make it simpler to understand, let's assume that this blue circle was obtained at 1000 hours. At 10:30, again we obtained a position circle, and that position circle is the same. So let me change the color now. Let's make a red color circle. मैंने ये बेटा एक रेड कलर का सर्कल बना दिया. जो ये रेड कलर का सर्कल है ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रेंज का है. The only difference is the red color circle corresponds to a time of 10:30. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा ये 10:30 का पोजीशन सर्कल है. So up to here कोई डाउट आया बेटा? Is it okay up to here? Yes sir. Okay. अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं. It says in this interval the vessel steers a course of 235. Let me make it 75 so that. So the vessel steered a course of 235 and the current was setting 330 at 2 knots. So from 1000 to 10:30 vessel was steering 235. Current is setting 330 at a rate of 2 knots. Determine the position of the vessel at the time of raising and dipping. तो सबसे पहले तो क्या करते हैं बेटा, जो 1000 आवर्स वाला ब्लू कलर का सर्कल है इसे हाफ एन आवर आगे ट्रांसफर करते हैं. लेट्स ब्रिंग देम टू बोथ द सर्कल्स टू 10:30. रेड सर्कल तो ऑलरेडी 10:30 पे है, ब्लू सर्कल को भी 10:30 पे लेके जाना है. कैसे लेके जाएंगे? हमारा कोर्स स्टीयर्ड है 235. तो ब्लू कलर सर्कल के सेंटर पे, आई विल डू दिस इन ब्लू कलर ओनली. ब्लू कलर के सर्कल के सेंटर पे मैंने 235 का कोर्स जो है ये लगा दिया. कितने डिस्टेंस के लिए लगाऊंगा? जितना मेरा इंजन स्पीड है. नाउ इंजन स्पीड इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो वी विल टेक इट फ्रॉम द नोट्स. नोट्स में आप देखोगे इंजन स्पीड इज गिवन एज 12 नॉट्स. सो 12 नॉट्स वी वांटेड फॉर 30 मिनट्स. तो ये 6 माइल का डिस्टेंस मैं यहाँ पे कट करूंगा. ये मेरा कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर आ गया, मैंने यहाँ पे सिंगल एरो के साथ मार्क कर दिया. करंट इज 330 विद द रेट ऑफ 2 नॉट्स. तो अब मैं करंट वेक्टर को अप्लाई करता हूँ. आई विल पिक अप रेड कलर. जहाँ पे कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर खत्म हुआ वहां पे मैंने 330 लगा दिया एंड इसकी डिस्टेंस मैं रखूंगा 30 मिनट्स के लिए 1 माइल. तो ये मैंने करंट वेक्टर का एरो भी लगा दिया. सो इफ आई ज्वाइन विद द एंड ऑफ करंट वेक्टर नाउ, लेट्स पिक अप ग्रीन कलर. अब मैंने सर्कल के सेंटर को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस ग्रीन लाइन बेटा? CMG. वेरी गुड. सो CMG आ गया. अब जो ये पॉइंट आ गया है हमारे पास, दिस इज द पॉइंट टू ड्रॉ द ट्रांसफर्ड पोजीशन सर्कल. अब मैं ट्रांसफर्ड पोजीशन सर्कल को ग्रीन कलर में बनाता हूं. आई कीप माई कंपास सेंटर्ड, यू कैन कॉल इट एज पॉइंट C. I keep my compass centered at C, open it equal to 3.6 miles और 3.6 माइल पे ओपन करके मैं ये सर्कल को ड्रॉ कर देता हूँ. सो ये सर्कल ड्रॉ हुआ एंड ये मेरे पास आ गया ग्रीन कलर का सर्कल. नाउ दिस ग्रीन कलर सर्कल इज ट्रांसफर्ड टू विच टाइम? 10:30 टाइम. सो मैंने ग्रीन कलर सर्कल पे 10:30 लिख दिया है. अब बेटा देखो, एक तो ग्रीन कलर का सेकंड सर्कल जो कितने माइल का लगाया सर हमने? बेटा जब हम सर्कल को ट्रांसफर करते हैं तो रेडियस बिल्कुल चेंज नहीं होता. जो पहले रेडियस था 3.6 माइल्स का, हमने एग्जैक्टली उतना ही रेडियस रखा है. ओके, बिकॉज पोजीशन सर्कल व्हेनेवर इट इज ट्रांसफर्ड द रेडियस इज नेवर चेंज्ड, द रेडियस रिमेन्स ऑलवेज सेम. ओनली द सेंटर इज शिफ्टेड, द रेडियस रिमेन्स सेम. ओके, तो ग्रीन कलर का सर्कल हमारे पास आ गया. इट रेफर्स टू 10:30
रेड कलर सर्कल ऑल्सो रेफर्स टू 1030. तो ग्रीन और रेड जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी पोजीशन होगी बेटा? 10:30. वेरी गुड. सो ये आ गई आपके पास 1030 की फिक्स. सो कैन यू टेल मी हाउ कैन वी ऑब्टेन 1000 फिक्स नाउ? So CMG transfer कर 10:30 क्वेश्चन पे जो बेटा CMG वेक्टर हमने निकाला था, just transfer that CMG vector to 1030 position in the reverse direction. तो हमने ये CMG वेक्टर को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया. Wherever it reaches, that is your 1000 फिक्स. ये 1000 की फिक्स आ गई हमारे पास. तो 1000 फिक्स इज बेसिकली, अच्छा ये जो फिक्स आएगी ना बेटा, सॉरी माय मिस्टेक, सर वो सर्कल को कट करेंगे. यहाँ नहीं आएगी जो, हाँ राइट. ये जो फिक्स आएगी बेटा, ये फिक्स आएगी बिल्कुल इस ब्लू कलर के सर्कल के ऊपर आएगी, क्योंकि ब्लू कलर का सर्कल हमारा 1000 आवर का सर्कल है. तो ऑटोमेटिकली दिस विल हैपन. आपको ये करना नहीं पड़ेगा. जैसे ही आप ये कोर्स मेड गुड वापस रिवर्स डायरेक्शन में लगाओगे, इट विल लैंड अप ऑन द ब्लू कलर सर्कल, बिकॉज ब्लू कलर सर्कल इज अवर 1000 सर्कल. तो ये 1000 की फिक्स आपके पास आ जाएगी. ओके सर, क्लियर हो गया सर. क्लियर? यस सर, क्लियर सर. Very good. So let's do number 5 also. Yes. Okay. Number 5 says at 2000 hours in DR position so and so, a star site gave an intercept of 1.3 mile towards. So let's go to this DR position. 51, 41, 7, 15. Okay. Okay. 51, 41 is this, and 7, 15 is this. So our DR position is here. This is the DR position. Let's pick up blue color. So star site gave an intercept of 1.3 towards azimuth 142. Let's draw azimuth 142. Azimuth 142 आ गया हमारे पास. Intercept is 1.3 mile towards. So from the DR 1.3 mile towards, this is the ITP, and I can draw my PL. This is my PL. बेटा जहां कहीं भी डाउट आए, जस्ट इंटरप्ट मी, स्टॉप मी देयर. तो ये हमारी पहली PL आ गई है. ओके. Now vessel is on a course of 288 true. Visibility reduced to 5 miles thereafter. Ballycotton Island light was first sighted at 21:30 hours. Find the vessel's position at 21:30 hours. Okay. Okay. So अब बेटा सबसे पहले तो you see the visibility is reduced to 5 miles. So we know the visibility in this case is 5 miles. The height of eye is given to us in the question. Height of eye is 15 meters. तो बेटा can you tell me कि ये visibility से और height of eye से हम क्या निकालेंगे? GR. PLR and GR. Very good. So यहाँ पे हम first sighting का concept use करेंगे. So we will find out the PLR. Visibility is given to us. And second thing, we will find out the GR, geographical range. इन दोनों में से जो भी छोटी रेंज होगी, that is the first sighting range of the Ballycotton Island light. So basically, जो वो रेंज आएगी, smaller of the PLR and the GR, आप उस रेंज के साथ एक पोजीशन सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. And this is at 21:30. So let's go to the chart now. I've come to the chart. Let's see where is Ballycotton Island light. We will have to zoom out.
Okay. This is the Belly Cotton Island light here. So we will find out the PLR and the GR. बेटा किसी ने ये निकाला है PLR और GR? Okay, it's all right. So whatever the range comes, you just keep your compass centered at Belly Cotton Island. Question number 5 question number 5 beta. This is question number 5. PLR sir 10.9 आया था और GR 24.2. Okay, so 10.9 and that second one is higher than this. So our range first sighting would be the PLR, that is 10.9. So you keep your compass centered at Belly Cotton, draw this line as 10.9. Okay, so ये हमारे पास एक position circle आ गया. Now this is for 21:30, right beta? Time is 21:30 na? Yes sir, time 21:30. 21:30. Now this PL was for 2000 hours. So ये दोनों चीजें अब हमारे पास आ गई हैं. What we will do now is we will transfer this position line to 21:30 क्योंकि दोनों को एक टाइम पे लाना पड़ेगा. Wherever they intersect will be our fix. So what I do is मैं ये ITP point पे अपना course steered लगाता हूँ. The course steered is given to us. So I apply my course steered and I apply my engine distance for 1.5 hours. तो ये मेरा जो है CTS vector आ जाता है. And I apply the current also. What's the current in this area? 0, 0, 0. 0, 0, 0 at a rate of 2 knots. Okay. I am steering a course of 288. तो ये मेरा course है बेटा 288. And they have not given us the speed, so we will assume our engine speed here. So for 1.5 hours it will be 18 miles. तो ये मेरा वेक्टर आ गया. Now current is 0, 0, 0 with a rate of 2 knots. तो ये मैंने current vector भी apply कर दिया. Let's mark it with 3 arrows. तो ये point आ गया है मेरे पास. Now this is the point where I can transfer my PL. तो मैं 2000 PL के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. So let's draw a line parallel to the 2000 line. तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है. This is my transferred PL now. Now this transferred PL is cutting at 2 places. One here you can call it X and the other one here you can call it Y. So one of them is our position. So can you tell me beta which will be our position here? Let's check out the question. Okay, let's check out the question. Have they given us any hint? So the question says. So first cited is sir 21:30. Okay. So X आएगा ना sir? That's right, beta. That's right. They have told us first sighted. Okay. Now let's go to the chart. Now you see, beta, if Y is your position, okay, and you draw your 288 course, it may go something like this. Okay. Or my diagram is not to the scale, but if you draw your course in reverse, it may go something like this. So it will tell you that at Y you are not first sighting this light. Okay. So immediately you will come to know that first sighting will happen only at X. Okay. So that's one way. अब अगर यहाँ पे ये फर्स्ट साइटिंग वर्ड ना भी यूज होता या ये हिंट हमें ना मिलता है इस क्वेश्चन में, तो फिर हम क्या करते? X और Y में से कौन सी पोजीशन लेते? तो ऐसे केस में बेटा अगर और कोई हिंट ना हो, नो हिंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन डू इज दोनों में से जो भी पोजीशन आपकी DR पोजीशन के पास आती है, ओके, इफ यू टेक दीज पोजीशन बैक, जो भी आपका कोर्स मेड गुड आया, दिस इज योर कोर्स मेड गुड, अगर आप इन दोनों पोजीशन पे अपना कोर्स मेड गुड रिवर्स में अप्लाई कर देते हो, वन पोजीशन कम्स हियर, the second position will come somewhere here.
इन दोनों में से जो भी नियरेस्ट टू द DR पोजीशन आती है दैट इज कंसिडर्ड एज आवर एक्चुअल पोजीशन। तो यहाँ तो फर्स्ट साइटिंग का हमें ट्रिक जो है, हिंट जो है वो क्वेश्चन से मिल गया, बट अगर ये ना भी हो तो भी जो भी पोजीशन हमारी DR के नियरेस्ट हो दैट इज कंसिडर्ड एज आवर एक्चुअल पोजीशन। सो दिस इज क्लियर बेटा नाउ? Yes, sir. Okay. So with this, we cover up our assignment number 2. Number 2 assignment is done. So with this, the time for first session is also finished. Okay. So let's take a break. After the break, we move on to, I will do one more concept with you. So with that concept, we will be able to jump into assignment number 3. So we will try to do assignment number 3 then. After the concept, पहले जो doubt था गौरव का वो doubt solve करेंगे and then the remaining questions of assignment number 3. So let's take a break now बेटा. After the break, we'll continue again. सर बोलो बेटा. सर ये असाइनमेंट नंबर 3 के तो सिर्फ सॉल्यूशन दिया था, क्वेश्चंस दिए नहीं थे सर। वो क्वेश्चंस एक बार सेंड कर देंगे सर ग्रुप पे? असाइनमेंट 3 अभी भेज देता हूँ बेटा. सर जनवरी बैच सर को दिसंबर ग्रुप तीनों ग्रुप्स को आ रही है बेटा. असाइनमेंट नंबर 3 जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीनों के लिए आ रही है और उसके लिए जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट चाहिए वो मैं अभी अगले वाले सेशन में आपको कवर करा दूंगा. ओके सर. Okay, so even if we are not able to finish the assignment 3 today, no problem. हम कल इसको assignment number 3 को complete कर लेंगे. Okay, अच्छा अब बेटा okay, let's go for a break. After the break, I'll discuss with you. So let's take a break now.